Hello guys, this is Nikhil Shinde. Today we are going to discuss about the Java currency formatter hackering problem. So let's start. Given a double precision number payment denoting an amount of money used in the number format class get currency instance method to convert payment into US, Indian, Chinese and French currency formats. Then print the formatted values as follows. US formatted payment, India formatted payment, China formatted payment and France formatted payment. Where formatted payment is payment formatted according to the appropriate local currencies. India does not have a built-in local, so you must construct one where the language is EN. Yes, this is a note. This is an important one. You should know about this. And the input format is like a single double precision number denoting payment. These are the constraint. Now output format is on the first line print US U, where U is the payment formatted for US currencies, and it is similar like for India it's I is a payment formatted for Indian currencies, for China is C, and for France is F. Uh, Now the input format is like in the form of double, then you have to convert it into the US, China, India and France currencies. So it's little bit tricky problem, but not that much difficult. Let's see. First of all, let's go to the code section. Now first of all, you have to create a class local in new local en and in. They gave us in note format, they gave us the India does not have an built-in local, so that you must construct one where the language is en. So here we're gonna construct a local as local in new local en in. So लेट्स फॉलो दिस क्वेश्चन, होल द क्वेश्चन। हैकरिंग में इतना ही है, जब आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, वो क्वेश्चन को सिर्फ आपको फॉलो करना पड़ता है। यही है हैकरिंग का जो कोर कंसेप्ट। हम जब बोलते हैं ना हैकर की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना पड़ता, तो ये ट्रिक है कि दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो एज इट इज फॉलो करो। उन लोगों ने जो दिया है करने को वही अपने को फॉलो करना है। सो नेक्स्ट लाइन इज मेक वन एरे लोकल, ये भी लोकल से लेंगे हम। लोकल इक्वल टू लोकल डॉट यूएस लोकल IN लोकल डॉट चाइना लोकल कौन सा रहेगा अभी, फ्रांस। फ्रांस रह गया था ना, फ्रांस। then string country equal to US, and then India, and then China, then फ्रांस। और यहाँ पे यूएस में जो है यूएस, यस ओके, एक कैपिटल और स्मॉल इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे कैपिटल यस, दोनों भी कैपिटल है। और यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर लूप, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन
country dot length and I plus plus. In for loop, we're gonna use a string current format number format. These are the built-in functions in Java, so we can directly use these functions. Get currency instant. In the current instant, use an local I, then this is have to be a small one, then format payment, then after that print means system dot out dot println country I plus this colon sign, it should be there, then use current format and semicolon. Let's see what happens, it's correct or not. Then it's a trick, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की लाइन है, जो 4 लाइन, वो अपने को निकलना पड़ेगा, तभी आपका कोड रन होगा. इट्स द सिंपलेस्ट वे, दिस वन whichever I show here, these are the simplest one. So let's see it's correct or not. फॉर्मेट में क्यों आ रहा है, let's see what happened. Okay, we got a compilation error. Why? Spelling mistake or something is there, so that's why we got an. So guys, यहाँ पे हमने error remove कर दिया है. Let's see it is working or not. Yeah, we got the correct output. So ये जो है एक कोड रहेगा यहाँ पे, शायद पहली बार मुझे लगता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, इसलिए वो नहीं ले रहा था. Let's submit the code. Yeah, we successfully cleared all the test cases and we got the success message from compiler. So yeah, if it is useful for you, then share this video to your friends and colleagues also, and like करो, comment करो, share करो, subscribe करो. Thank you.